Hello children, welcome back to the next session. In the previous session children, we have discussed standard hydrogen electrode and how it works. Today let us discuss using a standard hydrogen electrode how we find the electrode potential of other metal electrodes. Let us see the first example children here. In this example, we have a zinc electrode here. In the zinc electrode, zinc rod dipped in zinc ion solution, zinc sulfate, zinc chloride, any zinc salt, concentration being 1 molar. See children, whenever we say standard electrode potential, then the concentration of both the electrolytes, जो इसमें है और जो इसमें है, दोनों that is 1 molar. Standard condition में the concentration is 1 molar, temperature is 298 Kelvin और अगर कोई gas involved है तो pressure is 1 bar pressure. That is under standard condition. So when we represent E naught means standard reduction potential. Now here we have this zinc electrode connected to this hydrogen electrode. Hydrogen gas 1 bar pressure, 1 molar H plus ions, and connecting these two we have a salt wedge. तो यहाँ पर आपको जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और हाइड्रोजन हमें मालूम है 0 होता है. We are connecting this with hydrogen. So as compared to hydrogen, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का या लेने का टेंडेंसी कितना है, that we need to find out. इसके लिए we set up a cell like this. हमने ये cell set up किया with zinc and this standard hydrogen electrode. Now what we observe here is the deflection here in the voltmeter is towards this direction. That means the current is flowing through this direction and electrons in the reverse direction. और इसका जो रीडिंग है this is 0.76 volt. आपने ये कनेक्ट किया तो this deflection shows 0.76 volt. Now say children, E naught cell, किसी भी सेल का EMF is equal to E naught cathode minus E naught anode. Reduction potential of the cathode minus reduction potential of the anode. The most important thing children here is to decide कि आपका cathode कौन सी है और anode कौन सा है. Now this we can decide from here. अगर current इधर जा रहा है, that means electrons are going like this. That means ये electron lose कर रहा है, यहाँ oxidation, ये anode. ये electrons gain कर रहा है, यहाँ reduction, ये cathode. So I can write the reactions at cathode and anode. अगर आपको लिखना है तो I can write E reaction at cathode is, cathode पर क्या है अब hydrogen, it is accepting electrons, so this plus electrons gives H2, and reaction at anode is zinc is losing electrons and you getting Zn plus 2. तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, that is the cell reaction. Up to find the electrode potential, what we do children is, see the EMF of the cell that we get from here is 0.76 is equal to, यहाँ पर कैथोड हमने डिसाइड किया है हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है कि कैथोड है, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज ऑलवेज 0 वेदर इट बिहेव्स लाइक एन एनोड और लाइक अ कैथोड. दोनों केस में ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, दिस इज 0 माइनस E naught एनोड. सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस नाउ एज zinc electrode is represented like this. See children, this is how we represent the standard reduction potential. E naught means your standard condition. Zn plus 2 oblique Zn, that means reduction potential. Zn plus 2 is getting reduced to zinc, ये reduction potential है. Oxidation potential लिखेंगे तो आप उल्टा लिखेंगे, Zn oblique Zn plus 2. Here we are writing reduction potential. Oxidation potential children is now almost obsolete, we don't use the term. अब हम oxidation potential की जगह उसका negative reduction potential लेते हैं. Suppose अगर oxidation potential x है तो reduction potential is minus x. So we use only reduction potential here. So from here I can calculate E naught reduction potential of zinc comes out to be
minus 0.76. Reduction potential as compared to hydrogen is negative. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नेगेटिव है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है. तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल. अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, then it will be represented like this: E naught, zinc getting oxidized, the tendency of zinc to get oxidized. Now this is plus 0.76. But for all numerical purpose, for all questions, we only use standard reduction potential, minus 0.76. Another example, suppose you are comparing this with copper. See, if you have your copper rod and Cu plus 2 ions, again 1 molar, because we need to calculate E naught, standard electrode potential, तो concentration 1 molar. अब जब हम इसको इससे connect करते हैं, then we observe current flowing in this direction. How? Because the deflection of the galvanometer or voltmeter is in this direction, and this value reads 0.34. Now from here children, we must understand, करंट अगर इधर जा रहा है, डिफ्लेक्शन इधर है तो करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे. इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम हियर, दैट मींस दिस इज एक्टिंग एज एनोड. और एनोड जब हम लिखते हैं, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन. सो नाउ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन शुड बी लाइक दिस. नाउ in this case, standard hydrogen electrode acting as anode and copper electrode Cu plus 2, 1 molar. I am not drawing it again, I am just connecting it like this. Connected through a galvanometer. Now electrons flow from hydrogen to copper and current flows towards this direction. Now the deflection is like this and this value is 0.34. Now of course connected through a salt bridge. If I need to calculate E naught cell, I would write E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. In this case, cathode is copper electrode because the electrons are accepted by copper. Hydrogen is losing electrons. Hydrogen electrode is behaving as an anode. So, अब hydrogen electrode, I would write this is equal to E naught reduction potential of copper, which is the cathode, minus reduction potential of hydrogen, like this. जब reduction होगा, H plus getting converted to H2, so that is reduction potential. Cu plus 2 getting converted to Cu, again that is reduction potential. This is equal to E naught cell, ये value 0.34. This you need to calculate, minus E naught copper minus 0. So electrode potential or reduction potential of copper comes out to be 0.34 plus 0.34. This means copper has more tendency to get reduced. Higher reduction potential means more tendency to get reduced. So this has a higher tendency to get reduced as compared to hydrogen. Therefore ये value positive है. More tendency to accept electron as compared to hydrogen. Always जिसका reduction potential higher आएगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, उसकी मोर टेंडेंसी है रिड्यूस होने की. हायर रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मींस द टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो अब ये पॉजिटिव आया है. नाउ इस
तरह से हम सबका निकाल लेंगे तो विल गेट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. I have given you just a few examples. ऐसे हम सबका निकालते हैं. To discuss questions, I have taken here only few examples. See, electrode potential of lithium is most negative. That means सबसे कम है लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल लेने की टेंडेंसी. इसका मतलब देने की सबसे ज्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है. सो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. Then midway through we have hydrogen, जिसका reduction potential 0, and these metals copper, silver have a higher reduction potential than hydrogen. फिर ultimately we have non-metals because they have more tendency to accept electrons. फिर non-metals आएंगे, and maximum is fluorine. The maximum reduction potential is that of fluorine. अब फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम, यानी रिड्यूस होने का टेंडेंसी मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी मैक्सिमम. खुद इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा. Therefore, this is the strongest oxidizing agent and this is the strongest reducing agent. हम जब कोई भी सेल सेटअप करेंगे तो आपको इनमें से सपोज कोई दो इलेक्ट्रोड दिया है, तो फर्स्ट थिंग इज टू डिसाइड कि कौन कैथोड है कौन एनोड है. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा वो रिड्यूस होगा और वो ही कैथोड होता है. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो वो एनोड होता है. सपोज फॉर एग्जांपल, if I set up a cell, this is one of the applications of electrochemical series. Let's discuss applications of electrochemical series. Applications of electrochemical series. The first application and the most important is to find that if we set up a cell, अगर किसी दो इलेक्ट्रोड को लेके हमने एक सेल सेटअप किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमें ये मालूम पड़ेगा फ्रॉम द रिडक्शन पोटेंशियल्स कि इनमें से कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, कहाँ रिडक्शन होगा, कहाँ ऑक्सीडेशन होगा. एंड वंस वी नो द कैथोड एंड एनोड, वी कैन फाइंड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला E naught is equal to E naught cathode minus E naught anode. देखो, अगर आपको ये दिया है, ये सेल को आपका in which you have the cell reaction. We set up a cell in which the cell reaction takes place. So from here, children, I can see there are two reactions happening. Zinc getting converted to Zn plus 2. Another reaction, Cu plus 2 getting converted to Cu. Now, even without drawing a cell, I do not need to draw a cell all the time. Commonly, जो सेल आपने बार-बार किया ये वही सेल है. Then zinc gives Zn plus 2 electrons and copper ions will accept 2 electrons. So from here you can see, अगर हम इनकी वैल्यू कंपेयर करते हैं, कॉपर का E naught copper is reduction potential of copper is 0.34, and here E naught of zinc is reduction potential of zinc is minus 0.76. अब looking at these values, children, you know इसका reduction potential higher है तो ये कैथोड होगा, higher reduction potential, so this is cathode. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो रिड्यूस होता है, मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, एंड देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक अ कैथोड. देयरफॉर दिस इज एनोड. सो नाउ आई कैन फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन व्हिच दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. आई कैन से E naught सेल इज इक्वल टू E naught कैथोड माइनस E naught एनोड. E naught कैथोड, यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है तो ये आपका कैथोड है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.34 माइनस.
E naught anode यहाँ पर zinc anode है because it is losing electrons, so therefore it is behaving as anode and the value is minus 0.76. So E naught cathode minus 0.76. So this value comes out to be 6 plus 4, 10, 0, carry 1, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1. That is 1.1 volt. So that is the EMF of the cell in which this particular reaction is taking place. Right? I can discuss another example. Suppose you have a cell in which the reaction that is taking place is like this. Cu is getting oxidized and silver ions are reduced. So here you have two electrodes, copper and silver. E naught Cu plus 2 copper is, you can look at the value here, 0.34. Reduction potential of silver is plus 0.80 volts. Now comparing the two values, children, this is higher. Therefore, this has more tendency to get reduced. ये ज़्यादा tendency है reduce होने की, और अगर इसकी tendency reduce होने की ज़्यादा है, तो this is behaving like a cathode. अब आपका ये cathode होगा और ये anode होगा. So now E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. Therefore, E naught cathode हो गया 0.80 minus 0.34. This is equal to 0.46 volt. So if you set up a cell in which this reaction is taking place, जिसमें आपका copper electrode anode है, silver electrode cathode है, अगर आपने ऐसा सेल सेटअप किया, तब आपका उस सेल का EMF, standard EMF will be 0.46 volts. Children, that is how they find the E naught value, E naught EMF, standard EMF. E naught means standard EMF of the cell. That is only one application of electrochemical series. The other applications of electrochemical series, children, will discuss in the next session. Thank you so much. Stay home, stay safe.